A very warm good morning to all of you. Today's morning virtual assembly is being conducted by Class 10 on the theme Azadi Ka Amrit Mahotsav. At the very outset, I would like to call Himanshu Kumar to talk on Azadi Ka Amrit Mahotsav. Very good morning to everyone. My name is Himanshu Kumar, a student of class 10th. Today I want to express a few words in front of you all about the unsung heroes of freedom struggle under the great celebration of independence called Azadi Ka Amrit Mahotsav. One such personality who was a Padma Vibhushan awardee in the year 1998 was a significant voice of Indian women movement prior to the independence and later as well. Lakshmi Swaminathan, popular as Captain Lakshmi Sehgal, was born on 24 October 1914 in Tamil Nadu. Captain Lakshmi Sehgal was a revolutionary of the Indian independence movement, an officer of the Indian National Army, and a Minister of Women's Affairs in the Azad Hind government. Lakshmi is commonly referred to her rank when taken prisoner in Burma during the Second World War. Dr. Lakshmi Swaminathan became Captain Lakshmi, a name and identity that would stay with her for life. Thank you. A very splendid talk given by Himanshu Kumar. Now, I would like to call Anjali and Aishi to sing a patriotic song to enrich today's theme Azadi Ka Amrit Mahotsav. नमस्कार, आज हम कक्षा 10वीं की छात्राएं आप सभी के समक्ष देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हैं। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। इबादतें जुदा जुदा मगर अलग नहीं, खुदा मगर जुदा जुदा सही मगर ये दिल नहीं जुदा। इबादतें जुदा जुदा मगर अलग नहीं, खुदा अगर खुदा जुदा सही मगर ये दिल नहीं जुदा। नमाजों की आरती लड़े नहीं मरे नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। धन्यवाद। A marvelous song sung by Anjali and Aishi, and this will help to foster patriotic fervor among other hearts of our citizens. Next, I would like to call Sonia for the poem मैं भारत का जवान। नमस्कार, मैं सोनिया सिंह कक्षा 10वीं बा की तरफ से आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मैं भारत का जवान हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपने सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल तान के टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पे तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। जय हिंद, जय भारत। This poem is full of patriotic feeling and nicely presented by Sonia. Now, I would like to call Nakul to tell a story depicting the heroic deeds of our freedom fighters. Good morning, everyone. I am 10th B. Today I am here to present my views on the brave Indian soldier and the hero of the Kargil War, Captain Vikram Batra, who sacrificed his life for the sake of the nation. Batra joined the Indian Military Academy at Dehradun in June 1996. After completing his 19-month course, he graduated from the IMA. By June 1999, the Kargil conflict had been
underway for a month. Batra's battalion were to act as reserves to the 2nd Battalion. At the last day of his life, he was unwell with fever and was recuperating in a sleeping bag. The Indian Army was holding the area first flat top. Batra volunteered himself for the attack. He killed 4 enemy soldiers and successfully defended the area. He was awarded the Paramveer Chakra for his valor and wisdom. Thank you. This is well presented by Nathu and definitely motivate others to do the same. Now we conclude the assembly activities. Thank you and have a wonderful day.